everyone, welcome back to my channel Catch Up with RISHIKA. Today we will be talking in a chill mode. आज कोई ज़्यादा मतलब ऐसी बात करेंगे जो रिलैक्स वाली बात हो. And today we will be talking about traveling. You guys know how much I love traveling and I love to travel and I try my best कि कभी भी opportunity मिले ना travel करने की मैं कभी भी ना कहूँ. So today I will be sharing a best thing and you should also start noting it down because travel करते time ये चीजें बहुत जरूरी हैं. While traveling it is very important to keep one thing in your mind that your handbag should be the most comfortable thing that you carry थ्रू आउट द जर्नी. बिकॉज जर्नी जब बहुत लॉन्ग होती है ना तो आपको ना वो हर एक चीज अपने पास रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन जो होता है ना वही आपकी वो पूरी की पूरी जर्नी को बहुत आराम से स्पेंड करवा देती है, स्पेशली वाइल यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग रूट. So I will be telling you about the things which I carry and I will tell you guys also to carry every time with you. And हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैग से. We will be talking about the handbag that you should carry with you while traveling, and that bag should be the big huge bag like this one. So this is my big handbag which I carry with me most of the time while traveling. नहीं तो अगर ये नहीं तो कोई और, but size इतना ही होना चाहिए. Now I will be telling you why. You know guys, we always think that छोटा सा कैरी बैग लेके जाए, यार शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं. एंड ट्रैवलिंग शुड बी वेरी कंफर्टेबल. एंड हमारा लगेज तो चला जाता है, बाद में हमारे पास क्या बचता है, एक हमारा हैंड बैग. एंड आई हैव सीन पीपल रोमिंग अबाउट इन टू द एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एनीवेयर like carrying 3 to 4 carry bags and one small handbag. I was like, भाई जब तुम्हें पता है तुम्हें ट्रैवल करना है और तुम्हारे पास सामान है तो कैरी बैग कैरी करने की क्या जरूरत है. एक हैंड बैग ऐसा ले लो जिसमें तुम सब कुछ कैरी कर सको. लेकिन लोगों को कौन समझाए भाई. आई डोंट नो देयर लॉजिक बिहाइंड इट, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपको बताएगी कि आपका जो हैंड बैग है दैट इज द सेवियर भी वही होता है. So let's see what's inside my handbag and what I carry while traveling. So in my handbag I carry this small travel kit because जो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं and it is very difficult to find inside the big handbag. So this is a savior for you. You can carry small travel kits with you in which you can carry your small items which is very easy and comfortable for you to search it out when you need them the most. So first is the hair brush. I hate messy hair. I've seen people with the bad hair and you know guys, यार तुम ट्रैवल कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपके बाल तो खराब होंगे ही. So it's best to carry your small handy hair brush which you can use anywhere, and while sitting also you can just comb your hair and make your small baby fly hairs settle down. And if your hair is not in the position, you can use this brush to keep your hair clean and neat because I love neat hair. So next comes the hand sanitizer. I just love carrying hand sanitizers because all the time you just can't go to the washroom, wash your hand and eat your food, and sometimes you just skip washing your hand. I don't, but maybe there are people, those who feel very lazy going to the washroom and again washing your hand. And sometimes if you are traveling in plane and you are sitting in the middle of the seats between two people, so you will not tell them to excuse me, I just need to go and wash my hand, excuse me, I just need to go and wash my hand. So you cannot do that things. So sanitizer is a savior for you, and whenever you are eating anything, even your small snacks you are eating, so you can just use your hand sanitizer and you can wash your hand anytime. ये तो बात थी ये छोटे से ये ट्रैवल किट में क्या है, लेकिन ये ट्रैवल किट ही सब कुछ नहीं है. मेरे बैग के अंदर ये ट्रैवल किट होती है और इस ट्रैवल किट में क्या है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब हम बात करते हैं मेरे बैग के अंदर और क्या क्या चीजें निकलती हैं. अब चलो बैग के अंदर और क्या है. सो नेक्स्ट कम्स द क्लच के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती और मुझे वो लोग बहुत मेसी लगते हैं जो वॉलेट्स रखना प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक कि
उनके पास पॉकेट्स है, सो पॉकेट्स में डाल लेंगे पैसे और फटाफट से ऐसे पैसे निकाले और उनको दिए। मेरे को ना बहुत नीट एंड क्लीन मनी को रखना बहुत पसंद है कि मैं अच्छी तरीके से पैसों को निकालूं और दूं और वापस से पैसे डालूं। सो मैं अपने बैग के अंदर फेंक नहीं सकती। इफ यू आर कैरिंग अ बिग हैंड बैग, दैट डजंट मीन यू कैन थ्रो मनी इनसाइड इट एंड इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। नो, आई ऑलवेज कैरी अ क्लच टू कैरी माई मनी, बिकॉज हर एक चीज का एक पर्पस होता है। सो इसका भी एक पर्पस है। सो प्लीज पॉकेट्स का जो पॉकेट का इस्तेमाल है वो पैसों के लिए ना कीजिए और प्लीज एक छोटा सा क्लच आप प्लीज यूज कीजिए। नेक्स्ट कम्स दी कार्ड होल्डर। मुझे अपने क्लच में कार्ड्स रखना अच्छा नहीं लगता है, सो आई ऑलवेज कैरी अ कार्ड होल्डर जिसके अंदर मेरी आईडी प्रूफ्स, मेरे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स वो सब रहते हैं और एक अच्छी तरीके से रहते हैं, बिकॉज आपके जो क्लच में वो सब कुछ फिट नहीं आ सकता है। सो समटाइम्स यू थिंक दैट यू कैन कैरी इट इन योर हैंड बैग एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि ड्यू टू दिस स्टूपिड रीजन मेरे कितने सारे कार्ड्स गुम हो चुके हैं। सो टू बी more precise, I have experienced this thing and I really don't want you guys to do the same, and especially while traveling, because you are so much in hurry that you keep on throwing the things in your handbag because your handbag is so huge, but sometimes while taking out the things out you always lost one thing or the other. So be very particular about the things you carry and it should be organized. Phone, it is quite obvious, you cannot go anywhere without your phone, so in my bag there is phone as well. Oh my god, what a surprise. Just kidding. Charger, yes, I prefer carrying charger more than power banks, because I think that power bank takes so much of space in your bag and moreover it is too heavy. Don't want that my handbag should be heavy with the things जो मैं इजीली किसी ना किसी चीज से उसको एक्सचेंज कर सकती हूँ, एंड दैट इज चार्जर्स, बिकॉज हर एक जगह पे आपको चार्जिंग पॉइंट तो मिल जाते हैं एंड आई गेस आपके फ़ोन का इतना तो कैपेसिटी होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक चल जाए अगर आपका ज़्यादा लॉन्ग रूट है जहाँ पे आपको जाना है. सो चार्जर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, चार्जिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल. Next comes the paper napkin. I always carry paper napkins with me to stay away from the eating mess, because मुझे हाँ, I know people out there must be thinking यार जो टिश्यू पेपर्स होते हैं वो हर एक जगह पे मिलते हैं, तो भाई मैं क्या करूँ, मिलते हैं तो कभी कभी जब तुम अपनी सीट पे बैठ के कुछ खा रहे होते हो या आपका मन करता है कुछ खाने का, सो आपको हर एक जगह पे वाइल ट्रैवलिंग नहीं मिलेगा. सो ट्रैवलिंग के टाइम पे, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम जस्ट सेइंग दैट कैरी paper napkins with you all the time, because the people sitting next to you or sitting with you maybe feel unhygienic while you are eating, और आपके हाथ भी गंदे हो जाएं तो फिर आप क्या करोगे. और टाल्स का ये सिस्टम रहता है, जो हैंड टाल्स होते हैं, आई गेस मुझे वो ही गंदी वो जो हैंड टाल्स होते हैं उससे अगर आप हैंड क्लीन करेंगे तो वो आप ही के पास रहेगा. सो आई लाइक पेपर नैपकिन्स आर मच क्लीनर देन हैंड टाल्स. Next is mask. I know COVID is gone and you don't need mask, but mask is not only for the COVID. मास्क आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आपको एलर्जी है या किसी भी कोई भी स्नीज कर देता है तो वो आपको हमेशा दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. हमेशा कोविड से हर एक चीज़ को रिलेट नहीं करना चाहिए. सो कोविड के बाद से एक चीज़ तो मैंने सीख ली एंड दैट इज कैरिंग योर मास्क, बिकॉज कभी आप पोल्यूशन में चले जाओ या मे बी जिसके साथ आप बैठे हो वाइल ट्रैवलिंग, दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, सो यू कैन ऑलवेज पुट योर मास्क ऑन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट. Next comes the airpod. Why to disturb everyone while you are enjoying your movies or song? It is very annoying when someone is not carrying their AirPods or earphones, and whatever they are listening or enjoying the music, they want everyone to listen the music even if we don't want to, because जो भी आपके आगे पीछे या थोड़ा सा दूर भी बैठा होगा ना, उसके वॉल्यूम इतना हाई कर देता है जैसे हमें बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी बात सुनने में. सो आई जस्ट डोंट वांट कि सेम मेरे लिए कोई फील करे. सो आई ऑलवेज carry my AirPods because I don't want anyone to listen what I'm listening, and moreover it is very feasible for talking. So जब भी मुझे बात करनी है, I just want my hands to be
empty, and I can talk, and I can talk with the movement. So I just like talking in movement. So I just want my hands to be free. So AirPods. Next comes the compact. It is very important for me to carry it with me because while traveling स्वेट भी होता है और कभी कभी योर फेस स्टार्ट लुकिंग डल एंड आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे फेस पे वो ट्रैवल टायर्डनेस वो फेस पे दिखे. सो कॉम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टचअप एंड आई लव टू डू टचअप वाइल ट्रैवलिंग बिकॉज आई जस्ट वांट टू लुक फ्रेश. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ट्रैवल करके किसी मीटिंग में जाना है और हम थोड़ा लेट हो गए तो हमें घर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है और टचअप करने की जरूरत नहीं है. सो आई ऑलवेज कैरी कॉम्पैक्ट जस्ट फॉर अ लाइट टचअप. स्पेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी आईज पे स्ट्रेस पड़ जाता है. सो आई जस्ट डोंट वांट कि मैं उस चीज को भूल जाऊं और मेरे को ऐसे लगे कि ओ गॉड यार स्पेक्स कैसे कोई भूल सकता है. एंड आई एम लिटिल बिट नर्ड एंड आई लव टू रीड, आई लव टू सी थिंग्स ऑन माई फोन और आई लव टू रीड बुक्स. और कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं भूल जाऊं कि मैं स्पेक्स लेके नहीं आई हूँ. और ऐसा नहीं है कि मुझे विदाउट स्पेक्स कुछ पढ़ा नहीं जाता या देखा नहीं जाता. समटाइम्स योर आईज आर वेरी टायर्ड एंड योर आईज कैन नॉट फोकस ऑन द थिंग्स यू वांट टू फोकस. दिस विल ऑलवेज हेल्प मी टू फोकस ऑन द थिंग्स मोर एंड आई कैन सी people very clearly. Next comes the stole. Oh, this is the savior for me. This is multitasker thing. मेरे पूरे के पूरे बैग की चीज़ों में बिकॉज ये पिलो बन जाता है. मुझे ठंड लग रहा है तो आई कैन कवर माई सेल्फ, आई कैन कवर माई लेग्स. सो ये सब कुछ कर देता है और ये इतना छोटू सा होता है कि आप इजीली अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हो. और तभी मैं बोलती हूँ कि आपका हैंड बैग इतना बड़ा तो होना चाहिए कि ये सब चीज़ें इजीली आ जाए. और इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती है लाइक योर वाटर बॉटल्स, यू वांट टू ईट समथिंग एंड इफ़ यू वांट आप 1 से 2 स्टूल्स अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने फैमिली के लिए कैरी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. Only and only if you have a big handbag. So this was the complete video what I carry while traveling in my handbag, and I hope this video was very useful for you guys who is about to travel or planning to travel, या जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें लेके जाए जो हमें पूरे के पूरे ट्रैवल जर्नी में हेल्प आउट करे. या जो लोगों को समझ नहीं आता कि यार छोटा सा हैंड बैग कैरी करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है रादर देन कैरिंग अ बिग हैंड बैग. आई गेस छोटा हैंड बैग कैरी करना इज मोर डेंजरस देन कैरिंग अ बिग हैंड बैग. इट इज ऑलवेज कंफर्टेबल एंड येस ऑफ कोर्स अगर जैसे आप लैपटॉप अपना कैरी कर रहे हैं सो फॉर लैपटॉप यू हैव टू कैरी अनदर बैग. So it is very comfortable for you to carry a big handbag. There's a space for your laptop and for the rest of the things. And yes, I do carry my laptop in this handbag most of the times if I think that I really need it. So this was it and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. And अगर आपको अच्छा लगा होगा तो you don't have to do anything. You just have to subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and Facebook for more videos like these. And till then, bye-bye, take care and keep following me on Facebook and Instagram and do subscribe my channel. Catch up with Rishika.